Now let's look at another perspective on the law of karma. This is a very interesting statement, that the law of karma loves you just like everything else in the universe. Law of karma also loves you. Everything in the universe loves you. The reason is everything has come out of love. It cannot do anything else. Everything in the universe is a manifestation of the divine, and it loves you. So the law of karma also loves you, and it seeks your maximum welfare, कि तुहाडा भला होवे किसी तरह. And तुहाडा भला किस तरह हो सकता है? तुहाडा भला हो सकता है कि तुसी अपने अंदर, you connect back to your soul, which is the divine himself, which stands for eternal joy, bliss, peace and love. The law of karma wants to take you back to your soul. That is the role of law of karma. So every situation that you encounter in life, either good or bad, the situation is designed in a way to take you back to yourself. So Anita Moorjani says that everything that seemingly happens externally is occurring in order to trigger something within us, to expand us and take us back to who we truly are. So जो भी कुछ बाहर हो रहा है, जो भी circumstances बाहर हो रहे ने साडे नाल, भावें चंगे भावें बुरे, उनका मतलब इक्को ही है कि वो सानू साडे अंदर कुछ ट्रिगर करना चाहते ने. ट्रिगर करके की करना चाहते, साडे अंदर कुछ ट्रिगर, कुछ थॉट, कुछ इमोशंस ट्रिगर करना चाहते ने, so that we can go back to who we truly are. And who we truly are is मंतु ज्योत स्वरूप है अपना मूल पहचान. Who we truly are is ज्योत स्वरूप. We are divine. We stand for eternal joy, bliss and love. And that is what law of karma is doing to us. That's why Gurbani says, Sukh dukh teri aagya pyare, दूजी ना ही जाए. चाहे सुख आ रहा है, चाहे दुख आ रहा है, whether it's pain or pleasure, it is coming by the will of the beloved. How is it coming out of the will of the beloved? Because the law of karma has come out of the will of the beloved, isn't it? And law of karma loves us, and all the circumstances are created to help us go back to our original self, to help us become merged in the ocean of joy and love. So instead of looking at obstacles, as things which are opposing you, not helping you achieve your goals, you can look at obstacles in a different way. As Neil Donald Walsh says, obstacles are not opposing you but merely and gently rerouting you. It is important not to view that which stands in your way as your enemy. Now this is the problem with us, कि जब भी सानू कुछ लगता है कि यह चीज़ सानू दिक्कत ला रही है, मैं यह करना चाहता से हो नहीं रहा, तो सानू लगता है कि यह साडा दुश्मन है या यह चीज़ सानू नुकसान दे रही है. बट एवं नहीं है. जो कुछ भी हो रहा है वो किसी रीज़न करके हो रहा है. एंड इट इज़ वेरी इंपॉर्टेंट टू अंडरस्टैंड दिस, कि जो कुछ भी हो रहा है वो किसी रीज़न करके हो रहा है. किस रीज़न करके हो रहा है? वो साडे भले लई हो रहा है. अगर यह चीज़ सानू समझ आ जाए कि जो कुछ हो रहा है वो साडे भले लई हो रहा है, तो साडा सारा काम सफल है. Then we'll be happy. Then our journey to ourself will begin. भाई वीर सिंह जी ने गुरु नानक चमत्कार लिखी है, गुरु नानक देव जी की जन्म साखी. ਉਹਦੇ ਵਿੱਚ ਬਿਗਨਿੰਗ ਵਿੱਚ ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਲਿਖਿਆ ਕਿ ਤੁਸੀਂ ਕੁਝ ਵੀ ਨਾ ਕਰੋ, ਸਿਰਫ ਸ਼ੁਕਰਾਨਾ ਕਰੋ. ਰੱਬ ਨੂੰ ਸ਼ੁਕਰਾਨੇ ਤੋਂ ਵਧੀਆ ਕੋਈ ਚੀਜ਼ ਨਹੀਂ ਲੱਗਦੀ. ਬਟ ਤੁਸੀਂ ਸ਼ੁਕਰਾਨਾ ਕਿਵੇਂ ਕਰ ਸਕਦੇ ਹੋ ਜਦ ਤੱਕ ਤੁਸੀਂ ਆਪਣੀ ਲਾਈਫ ਵਿੱਚ ਪ੍ਰੋਬਲਮਸ ਦੇਖ ਰਹੇ ਹੋ? ਹਾਊ ਕੈਨ ਯੂ ਬੀ ਗ੍ਰੇਟਫੁਲ? You can be grateful only if you are joyful, only if you are seeing the perfection in your life, only if you are seeing the abundances in your life, if you are seeing the good things in your life. You cannot be grateful if you are seeing problems and enemies and troubles and turbulence in your life. So instead of viewing things which come in your way as obstacles, think of them as your best friends.
ਐਵੇਂ ਵੀ ਤੇ ਹੋ ਸਕਦਾ ਕਿ ਜੋ ਤੁਸੀਂ ਅਚੀਵ ਕਰਨਾ ਚਾਹੁੰਦੇ ਸੀ ਉਹ ਅਚੀਵ ਕਰਨ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਬੜੀ ਪ੍ਰੋਬਲਮਸ ਕ੍ਰੀਏਟ ਹੋ ਜਾਣੀਆਂ ਸੀ। ਐਵੇਂ ਨਹੀਂ ਹੋ ਸਕਦਾ ਕਿ ਆਰ ਯੂ ਸ਼ੋਰ ਫॉर दैट? ਹੋ ਸਕਦਾ ਹੈ ਕਿ ਜੋ ਤੁਸੀਂ ਅਚੀਵ ਕਰਨਾ ਚਾਹੁੰਦੇ ਹੋ ਉਹ ਅਚੀਵ ਹੋ ਜਾਂਦਾ, ਬਟ ਉਸ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਬਹੁਤ ਸਾਰੀ ਪ੍ਰੋਬਲਮਸ ਖੜੀ ਹੋ ਜਾਂਦੀਆਂ, ਤੇ ਅਗਰ ਕੋਈ ਦਿੱਕਤ ਆ ਰਹੀ ਹੈ ਲਾਈਫ ਵਿੱਚ ਉਹ ਤੁਹਾਨੂੰ ਬਚਾਉਣਾ ਚਾਹੁੰਦੀ ਹੈ ਉਨ ਪ੍ਰੋਬਲਮਸ ਤੋਂ। ਐਵੇਂ ਨਹੀਂ ਹੋ ਸਕਦਾ। ਦਿਸ ਇਜ਼ ਵਾਟ ਨੀਲ ਡੋਨਾਲਡ ਵਾਲਸ਼ ਇਜ਼ ਸੇਇੰਗ। ਔਰ ਅਗਰ ਗੁਰਬਾਣੀ ਨੂੰ ਪੜ੍ਹੀਏ ਤੇ ਇਹੀ ਹੋ ਰਿਹਾ ਹੈ। ਹੁਕਮੈ ਅੰਦਰ ਸਭ ਕੋ ਬਾਹਰ ਹੁਕਮ ਨਾ ਕੋਏ, ਨਾਨਕ ਹੁਕਮੈ ਜੇ ਬੁਝੈ ਤਾਂ ਹਉਮੈ ਕਹੇ ਨਾ ਕੋਏ। Everything that is happening is under the divine will, and divine will is full of love and compassion. So nothing is happening in the world that is against you. Everything is happening in your best interest. Think about it. ਇਹ ਦੁਨੀਆ ਜੋ ਅਸੀਂ ਸੋਚ ਰਹੇ ਹਾਂ, ਇਹ ਦੁਨੀਆ ਉਹ ਨਹੀਂ ਹੈ। ਦੁਨੀਆ ਵਿੱਚ ਅਥਾਹ ਪਿਆਰ ਚੱਲ ਰਿਹਾ ਹੈ, ਅਸੀਂ ਉਸ ਪਿਆਰ ਤੋਂ ਵਾਂਝੇ ਹਾਂ। We just have lost our connection. ਜਿਵੇਂ ਗੁਰਬਾਣੀ ਕਹਿੰਦੀ ਹੈ ਨਾ, ਨਰਪਤ ਏਕ ਸਿੰਘਾਸਨ ਸੋਇਆ, ਸੁਪਨੇ ਪਿਆ ਬਿਖਾਰੀ। ਇਹਦਾ ਕੀ ਮਤਲਬ ਹੈ? ਇੱਕ ਰਾਜਾ ਸੀ, ਉਹ ਆਪਣੇ ਸਿੰਘਾਸਨ ਉੱਤੇ ਬੈਠਾ ਹੀ ਸੋ ਗਿਆ। So he slept even while seated on his throne. Now he is a king, but in his dream he is thinking that he is a beggar and he is begging around, asking for alms कि मेरा किसी तरह आज रात का गुजारा हो जाए। This is who we are. गुरबाणी says that. ਮਨ ਤੂੰ ਜੋਤ ਸਰੂਪ ਹੈ ਆਪਣਾ ਮੂਲ ਪਛਾਣ, ਅਸੀਂ ਵੀ ਤੇ ਭਿਖਾਰੀ ਬਾਖ ਮੰਗਦੇ ਫਿਰਦੇ ਹਾਂ, ਇੱਥੋਂ ਸੁੱਖ ਮਿਲ ਜਾਏ, ਇੱਥੋਂ ਸੁੱਖ ਮਿਲ ਜਾਏ। Ultimately all our pursuits of happiness, isn't it? ਅਸੀਂ ਕੁਛ ਹੋਰ ਤਾਂ ਨਹੀਂ ਲੱਭ ਰਹੇ ਨਾ, ਇਹੀ ਪਿਆਰ ਖੁਸ਼ੀ ਲੱਭ ਰਹੇ ਹਾਂ ਦੁਨੀਆ ਵਿੱਚ। ਚਾਹੇ ਪੈਸੇ ਕਮਾ ਕੇ, ਚਾਹੇ ਧੱਕੇ ਖਾ ਕੇ, ਚਾਹੇ ਕੁਛ ਵੀ ਕਰਕੇ, ਲੋਕਾਂ ਦੇ ਚਮਚੇ ਬਣ ਕੇ, ਕੁਛ ਵੀ ਕਰਕੇ। all pursuits are pursuits of happiness and love and peace. ਔਰ ਇੱਕ ਤਰਫ ਗੁਰਬਾਣੀ ਸਾਨੂੰ ਕਹਿੰਦੀ ਹੈ ਕਿ ਇਹ ਤਾਂ ਤੁਹਾਡੀ ਹੈਰੀਟੇਜ ਹੈ। joy, peace and love belongs to you. This is your true nature. You don't need to seek outside. This is who you are. This is who you are. Just look at yourself. Just wake up. जाग ले हो रे मना, जाग ले हो, कहाँ गाफल सोया। कब तक सुते रहेंगे? कब तक यह साडी फाइट चलती रहेगी? जब दुख आएगा तो असी लड़ना शुरू कर देंगे हैं, कोसना शुरू कर देंगे हैं, पर उस दुख दे पीछे जो रीज़न है वो साडा ही वेलफेयर है, वो साडा भला करता है तो असी उन्होंने गालां कढ़दे हैं, पर वो करी जांदा है because that is what he stands for. एक स्टोरी मैनू याद आ रही है। एक राजा सी ते उहदा एक नौकर सी। राजे दा नौकर नाल बड़ा प्यार सी क्योंकि नौकर बड़ा चंगा सी, बड़ी सेवा करदा सी राजे दी, बड़े दिलों सेवा करदा सी ते राजे दे बड़ा प्यार सी नौकर नाल। ते एक बार वो दोनों जंगल में जा रहे सी ते राजे ने देखा कि एक फल लगे आया पेड़ नूं। राजे ने फल तोड़ लिया ते अपने नौकर वाल देखा तो उन्हें कहा कि इनू पहले देना है, बड़ा प्यारा है मैनू। तो उन्हें की किया, फल थोड़ा जा तोड़िया, पहले नौकर नू दे दिता। नौकर ने जब खादा तो उन्हें कहा कि राजा जी ये फल तो बहुत अच्छा है, मुझे थोड़ा और दे दो। राजे ने थोड़ा और दे देता, फिर उन्हें वो भी खा लिया, फिर उन्हें क्या नहीं थोड़ा और चाहिए। तो राजे ने एवं कर करके उन्होंने लगभग सारा देता, हूँ थोड़ा जा रह गया, बिल्कुल एक बाइट रह गई। तो राजा जब खान लगा तो नौकर ने वो भी चपट्टा मार के ਉਹਦੇ ਕੋਲੋਂ छीन लिया। तो वो भी जब खान लगा तो राजे ने कहा कि यह तो गलत गल है। तो राजे ने ਉਹਦੇ ਕੋਲੋਂ ले लिया तो खा गया। तो जब खादा तो वो से एकदम कौड़ा। It was as bitter as poison. तो राजे ने एकदम थुक के उन्होंने सुट दिता। तो उन्होंने पूछा कि व्हाट इज दिस, इन्ना कौड़ा फल सी ते तू ऐ खांदा रहा।
ਤੇ ਨੌਕਰ ਨੇ ਕਿਹਾ ਕਿ ਜਦ ਤੁਹਾਡੇ ਹੱਥੋਂ ਜਿਸ ਹੱਥੋਂ ਮੈਨੂੰ ਇੰਨੇ ਮਿੱਠੇ ਫਲ ਮਿਲੇ ਨੇ ਅੱਜ ਤੱਕ ਇੱਕ ਵਾਰੀ ਕੌੜਾ ਫਲ ਮਿਲ ਗਿਆ then why should I complain? ਜਿਸ ਪਰਮਾਤਮਾ ਤੋਂ ਸਾਨੂੰ ਇੰਨਾ ਕੁਝ ਮਿਲਿਆ ਹੈ, do we have a right to complain? We need to think it ourselves.